जय जगन्नाथ जय श्रीराम टिके ऑडियो एंड वीडियो क्लियरली तुमको सुना होची बोले टिके कंफर्म करो देन हम स्टार्ट कर दो 62 वाचिंग आउ डेरी करियने ऑलरेडी डेरी हे गलानी तो नेटवर्क प्रॉब्लम पे टिके डेरी हे एंड सॉरी फॉर द लेट तो स्टार्ट करिया हम इमीडिएटली तो तमरो जो क्वेश्चन टा तमरो OUT जो ऑफिशियल वेबसाइट रहला out.ac.in जो थ्री ऑफिशियल वेबसाइट रे जोटा की तमरो पडिची तो तार क्वेश्चन रो हम आज डिस्कशन करिया ठीक अछि चलो ओके संदीप सुचि गायत्री पायल सुहानी देवज्योति बढ़िया फर्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच ऑफ द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ द रिगार्डिंग टू एक्सक्रीशन इन इन्वर्टिब्रेट जनरली जो इन्वर्टिब्रेट मानक रहले तो तांकर एक्सक्रीशन को नेकी क्वेश्चन कोन हबो करेक्ट स्टेटमेंट पचाच इन प्लैटिहेल्मिन्थेस स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज द फ्लेम सेल help in osmoregulation and excretion in Ascihelminthes an excretory tube remove the body waste from the body cavity through the excretory pore any leader and nephridia help in osmoregulation and excretion कोन हबो करेक्ट स्टेटमेंट पचाच एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हमको क्लियर देखा जाउनी टिके क्रॉप कर दो माने टिके कर दो तळ उठी कर दो आई थिंक बेटर होंदा कोन एबे देखलो क्लियर देखा होला ठीक अछि एती लेवल थाउ एडजस्ट करो एंड एते भी तमरो विटामिन ए डेफिशिएंसी हेइनी कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हेइनी तो चलो कोन हबो बी हमें जानि छे दैट इज एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन एंड प्लैटिहेल्मिन्थेस जा को हमें कोचे फ्लैट वर्म तो फ्लैट वर्म मानकर जनरली जो रहिला फ्लेम सेल इज एन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पे इंपोर्टेंट एस्टिहेल्मिन्थेस रो एक्सक्रीटरी पोर पूरा डायरेक्ट एनसेटर लाइनिंग आ एनिलिडा मानकर जनरली नेफ्रिडिया टा होची इंपोर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन और डायरेक्ट एनसेट रो क्वेश्चन जो माने एनसेट रे पढिथिबे थरोली तो तुम माने दैट इज रिलेट करि परथिबो डायरेक्ट चलो रिनेट सेल ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा the scientist who performed the series of experiment to show the essential role of air in the growth of green plants ओ साइंटिस्ट जनरली एक्सपेरिमेंटल प्रूव करथिले कि एयर टा होची हमरो इंपोर्टेंट रोल प्ले करची फॉर द ग्रीन प्लांट्स कोन हो आंसर जूलियस बॉन्सवेल्स ना चार्ल्स डार्विन ना जोसेफ प्रिस्टली ना ह्यू डी वेरिस कोन हो आंसर इजी क्वेश्चन पूरा मन रखो आराम से मन रखो प्लैटिहेल्मिन्थेस रो फ्लेम सेल एनिलिडा रो नेफ्रिडिया एस्केलेम्थेस रो एक्सक्रीटरी पोर एंड देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एकानोडोमाटा कोन हो आंसर जोसेफ प्रिस्टली बढ़िया मन अछि जोसेफ प्रिस्टली को एक्सपेरिमेंट तो जोसेफ प्रिस्टली गोटे जार नेथिबा एंड जार भीतर गोटे कैंडल लगेथिबा गोटे मुसा थिबो तो किछि समय पर देखला बेलको जनरली कैंडल लिभि हेतिबो एंड मुसा भी मरि हेतिबो देन से कोन करे ना गोटे मिंट प्लांट को तादरे लगेबे मीट प्लांट को रखिला फल रे हेतिबो जनरली कोन ना मीट प्लांट हम जानि छे ऑक्सीजन को रिलीज करे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करे तो एया हेतिबो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड को जहां जळुथिबो सब दैट इज कैंडल जळियार कार्बन डाइऑक्साइड मीट प्लांट तो कंज्यूम करथिबो एंड मुसा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करथो ताकू भी कंज्यूम करथिबो एंड ऑक्सीजन रिलीज करथिबो एंड ऑक्सीजन ता कोन होथिबो बा एयर ता जनरली थिबा कारण रो मुसा बचथिबो एंड कैंडल भी बेल जार एक्सपेरिमेंट परफेक्ट बेल जार एक्सपेरिमेंट राइट जोसेफ प्रिस्टली देन मते को जूलियस बॉन्सवेल्स कौन एक्सपेरिमेंट करथिले जूलियस बॉन्सवेल्स व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय जूलियस बॉन्सवेल्स कौन कहितले विश्वजीत सुहानी प्रियंका जूलियस बॉन्सवेल्स को एक्सपेरिमेंट कौन थिला को फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड जूलियस बॉन्सवेल्स ऑक्सीजन डिस्कवर जूलियस बॉन्सवेल्स को एक्सपेरिमेंट कौन थिला सार्थक कौन हबो जूलियस बॉन्सवेल्स को एक्सपेरिमेंट that is glucose related देथिले glucose is produced during the process of photosynthesis in the green plants चलो glucose related कहितले glucose ता that is photosynthesis production होय next question what is the reason for using the cattle dung in a biogas plant generally biogas plant रे cattle रो dung को काई यूज करा जाय biogas plants are situated in rural area and produce a lot of slurry. It is a cheaper raw material. Now it contains the methanogens, a major component of production of methane. कौन हबो
इजी क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नो क्वेश्चन तम पाखरे कोन हो डी समस्त का आंसर डी आमे जानि छे दैट इज कैपिटल डोंग रे जो बायोगैस रहिला एंड बायोगैस रे क्वेश्चन तमरो 2023 रे भी क्वेश्चन जे देखिया तो बायोगैस रे जनरली को गैस थाए मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन चल आंसर कोन हेतला दैट इज मिथेन तार आंसर कोन हबो डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which of the following is not a characteristics of a lichen generally lichen को नै क्वेश्चन या भितर कोउटा lichen रो characteristic feature नुह 88 watching आउसो पिला कोडे गले रैंडम टारगेट दैट इज कंटेन्स द मिथेन मेजर कंपोनेंट ऑफ मिथेन दीप्ति बढ़िया को आंसर कोन हबो which of the following is not a characteristics of a lichen बा जनरली lichen रो कोटा characteristics feature नुह बढ़िया हला तुम लेटर उडा देखा होछि तो परफेक्टली ते कंफर्म करो कि लेटर उडा परफेक्टली देखा होछि लक्ष्मी पायल विश्वजीत संदीप चला इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द algae and fungi perfect that is algae and fungi रो एसोसिएट को हमें लाइकेन बोली कहउछे इट इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन बा पॉल्यूशन पई गुड इंडिकेटर परफेक्ट इट कंटेन्स डीएनए दैट रिक्वायर्स द होस्ट टू रेप्लिकेट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन कोन ऑफ आंसर it requires host cell to replicate ना it contains DNA but it requires the host cell कहीं ना किसी host cell दरकार नहीं that is algae fungi जेहेतु associate कर रहउछथि तो दी जण पई food and that is the shelter provide करि परियो fungi to algae and algae ता पई water provide करि परियो ठीक अछि and मत को कि algae and fungi रो जो associate विषय भितरु which one is the phycobiont and which one is the mycobiont की होछि phycobiont अब के mycobiont कोन आंसर Phycobiont or mycobiont किए which one is the phycobiont and which one is the mycobiont कोन आंसर mycobiont होची फंगी ट्रिक कहितले जो मन को मन रहउनी एफएम बोली मन रखिबो एफएम जो टीवी रे जो रेडियो रे बाजे एफएम पर धूम मिठा तो दैट इज फंगी एंड एम पर होची mycobiont चलो फंगीटा होची mycobiont देन अल्टरनेटिव algae टा हिजबो Phycobiont next चलो identify the incorrect statement related to the Hardy-Weinberg principle generally Hardy-Weinberg principle जो रहला तो ता related question Hardy-Weinberg principle रे कोटा होची incorrect statement कोन हबो Hardy-Weinberg principle रो that is question answer समस्त को कोन हला फंगी माइकोबैंड algae बढ़िया अछि सौदामिनी शुभलक्ष्मी हिरामय तृप्ति बढ़िया मॉस आंसर दो सब चलो कोन हबो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल हम जानि छे हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल जनरली पांचटा फैक्टर अफेक्ट करे जीन माइग्रेशन जीन म्यूटेशन देन होची जेनेटिक ड्रिफ्ट एवळे के पांचटा फैक्टर तो क्वेश्चन पचाछि कोन ना जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज द कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड साइड पॉपुलेशन ठीक अछि द हार्डी-वैनबर्ग इक्वेशन इज अफेक्टेड बाय द जीन मिग्रेशन जीन फ्लो एंड जीन माइग्रेशन होबा फळे हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड हुए allele frequency in a population remains steady from generation to generation now mutation has no effect that is हम जानि छे जीन माइग्रेशन जीन फ्लो जीन म्यूटेशन एंड आल्सो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड दैट इज म्यूटेशन ये सब फैक्टर गुडा को हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड करंती तो म्यूटेशन हैज नो इफेक्ट एटा भूल म्यूटेशन हैज एन इफेक्ट ऑन द हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल ठीक अछि बढ़िया रेडी समस्त को परफेक्ट सदा किटू पायल तृप्ति चलो बढ़िया अछि नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज तमरो क्वेश्चन होची लोकोमोशन एंड मूवमेंट रो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेटेड डिसऑर्डर जनरली रिलेटेड डिसऑर्डर पचारची sorry locomotion and movement ro question got inflammation of joints due to extra deposition of calcium na myasthenia gravis autoimmune disorder which inhibit the sliding of myelin filaments na muscular dystrophy age related shortening of the muscle na osteoporosis decrease in the bone mass and higher chances of fracture in the advantage kon hobo कोउटा पचारछि तमरो correctly describe got तो नो got होची inflammation of joints due to accumulation of uric acid हवा कथा
गॉट टा कौन हो तो accumulation of joints due to inflammation of joints due to accumulation of uric acid एटा हबा कथा हबनी माइस्थेनिया ग्रेविस रे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जनरली कौन हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हुए पैरालिसिस हुए इतरे कौन हुए ना न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड एंड पैरालिसिस हुए मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर ठीक अछि ताले आंसर कोन हबो डिक्रीज इन बोन मास ताले कोन हबो इन्फ्लेमेशन एट द वूल पचारछि कि करेक्टली डिस्क्राइब माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर व्हिच इनहिबिट द स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल बा सेटुलर मसल टा जनरली शॉर्टन हो जिवो ताले एटा को हम कहि परिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी रे डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल बा स्केलेटल मसल टा आस्ते आस्ते डिजेनरेट हो जिवा कारणरू मसल टा शॉर्टनिंग हे परियो सी कहि परिया देखो माइस्थेनिया ग्रेविस जनरली होचे न्यूरो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक अछि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड पैरालिसिस हुए जोटा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओस्टियोपोरोसिस रे जनरली कोन हुए ना जनरली डिक्रीज ऑफ बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर एंड एडवांसेस एटा भी हेई परियो हला मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ओस्टियोपोरोसिस रो दैट इज एप्रोप्रिएट एज पर दीटा को किछ कहि होबनी हला चलो नेक्स्ट सो ऑन करो तो 105 वाचिंग बट लाइक है टोटल ऊपर 50 लाइक पिला ना धड़ किना लाइक करिवे हम पिला सब को क्वेश्चन कोन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर आर नॉट इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली सेपल पेटल एंथर फिलामेंट ओव्यूल स्टाइल कोन आंसर ये रे देला पेटल सेपल एंड रिसेप्टेकल देन होची स्टाइल स्टिग्मा ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ओवरी बी ऑप्शन सी ऑप्शन देला एंथर फिलामेंट एंड ओव्यूल डी ऑप्शन देला स्टाइल ओव्यूल एंड फिलामेंट कोन हो स्टाइल ओव्यूल फिलामेंट आंसर कोन हो ओनली ए हेई परियो काहे कि ना देखो सेपल पेटल और रिसेप्टेकल टा एटा ही जनरली डायरेक्टली इन्वॉल्व नो बट द स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भीतर ओवरी तर इंपोर्टेंट बी ऑप्शन रे ओवरी आसी होची देन एंथर फिलामेंट रे एंथर भी दरकार ओव्यूल भी दरकार देन एथिर ओव्यूल दरकार सो दैट ऑप्शन हो ओनली ए नेक्स्ट चलो बढ़िया क्वेश्चन which term includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of a seed to senescence germination of a seed to senescence पर्यंत जो stage ता that is called as differentiation redifferentiation de-differentiation ना development कौन हबो समस्त आंसर कौन अछि that is डेवलपमेंट चलो आंसर होची डेवलपमेंट देखो विद्यासागर क्लासेस तरफ रु बहुत सारा पिलांकर दैट इज कमेंट भी आसुची तो 1 ईयर प्रिपरेशन जो माने दैट इज ओयूटी पई 1 ईयर प्रिपरेशन होचंदी ताको पई एक्सक्लूसिवली बैच अछि कि एमति नाही कि कोन से बैच से मा बसा जीवो तो पूरा डायरेक्टली दैट इज डायरेक्टली ओयूटी पई ही एक्सक्लूसिव बैच अछि तो जो माने इंटरेस्टेड थिबे ओयूटी परे परे देन से जणेबो एंड आल्सो एनरोल करके जॉइन करि परिबो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ क्लास तो डेवलपमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is correct regarding the tissue culture related रे तमरो that is पचारछि correct regarding tissue culture रो क्वेश्चन producing thousands of plants through the tissue culture is micropropagation ठीक अछि tissue culture was learned by the scientists during the 1960 correct पचारछि a cell without plasma membrane is called as protoplast na cell without cell wall is called as protoplast the capacity to generate whole plant from any cell or explant is called as soma clones देखो बढ़िया क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कोन आंसर ए आसुची समस्त ए पचार जी करेक्ट हां हमें जानि छे दैट इज ऑप्शन ए होची परफेक्ट एंड टिश्यू कल्चर क्वेश्चन त माने सब जानि छ बढ़िया अछि ए
आम जाने टिश्यू कल्चर वाज लर्नड बाय साइंटिस्ट 1950 according to NCERT. Then cell without plasma membrane, no, that is cell wall. Capacity to generate whole plant from any cell or explant by any part of that is called as kono totipotency cell बोली कहि परिया. Capacity that is called as totipotency. Totipotency होगा कथा ठीक अछि. बढ़िया. A is right. चलो बढ़िया. Next question चलो. Which of the following is not a primary metabolite? कोटा primary metabolite नुहो. Which of the following option is not a primary metabolite? बायोमोलिकुलर क्वेश्चन एंड बायोमोलिकुलर तुम जो टेबल देनी ए जहां भी जा क्वेश्चन गुड़ा डायरेक्ट एनसीईआरटी बही रे देछि पूरा कोनोसी गोटी भी क्वेश्चन तुम पाइबनी एनसीईआरटी बुक बाहरु तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी बही खोलिबो प्रत्येक सेट ओके तो सबु जाक क्वेश्चन पूरा टू दी पॉइंट एनसीईआरटी रो थुआइछ जो माने एनसीईआरटी को टिके भलो से रीड करथिबे तो से ए क्वेश्चन तांको किछि भी लागु नथिबो बहुत इजी क्वेश्चन आई थिंक रिलेट कर परियो कोन हबो दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट नुहो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब होचे प्राइमरी मेटाबोलाइट बट जदि हम देखिबा एसेंशियल ऑयल टा जनरली प्राइमरी मेटाबोलाइट नुहो हला बायोमोलिकुलर से जो टेबल देछि से टेबल रो क्वेश्चन एटा नेक्स्ट चलो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय द रिप्रेसर इज रेपोर्टेड एज एक्टिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन ना पैसिव रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय द रिप्रेसर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय द रिप्रेसर कोन हबो आंसर दियो बढ़िया अछि समस्त कोन नेगेटिव रेगुलेशन ना पॉजिटिव रेगुलेशन इट इज पॉजिटिव रेगुलेशन सी के जनकर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन बी नेगेटिव रेगुलेशन तो जनकर आंसर दैट इज बी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन होबो पॉजिटिव बाय द लैक ऑपरेंट इज नेगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन होबा कथा सी पॉजिटिव रेगुलेशन चलो नेक्स्ट that is through photosynthesis at least half of the total carbon dioxide fixation on earth inside a direct line question through the photosynthesis half of the carbon dioxide fixation takes place on the earth is carried out by that is the neem tree na mosses na fern na algae direct inside a line question kon hobo through the photosynthesis at least half of the carbon dioxide fixation occurs by the direct line question kon algae that is half of the carbon dioxide fixation algae next question chalo biotechnology ro question easy question tum pai restriction enzyme ligase lysozyme chitinase kon hobo आंसर दियो एटा तळ को नै जा restriction enzyme ligase lysozyme ना chitinase restriction enzyme रो काम कोन दैट इज हम जानि छे कट द डीएनए पीसेस एंड हम जानि छे लाइगेज को जनरली हमें कहू छे मॉलिक्यूलर ग्लू बोली एंड restriction enzyme को आजे मॉलिक्यूलर सीजर बोली तो एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लाइगेज इज टू जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ lysozyme is important to break down the bacterial cell wall and chitinase is important to break down the fungus cell wall because fungus cell wall is made up of chitin so that enzyme दरकार chitinase ठीक अछि पायल टिके एरा स्क्रीनशॉट मराइ छि तो सो दैट टिके तुमको देखा न देबो ट्राई कर देखिया पे हबो ऑलरेडी जोडी सालेनी तो तमे ए बी सी डी जोडी दबो कोठी अछि ओ नेक्स्ट चलो
इकोस एंड टॉयलेट्स रो क्वेश्चन जम्मा तमर भूल होबनी आ जदी भूल होबे क्वेश्चन भाई रे इकोस एंड टॉयलेट जदी क्वेश्चन भूल होला जानि कि पूरा सोई पड़छ तमे इकोस एंड टॉयलेट आर ए प्रैक्टिकल हाइजेनिक एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट मनीषर झाड़ार केमि भलो से डिस्पोजल करा जिवो सेति पय इकोस एंड टॉयलेट करा हितला जोथिरे कि मनीषर झाड़ा को दैट इज 8 9 मास मते रखी कि ताको गोटे फर्टिलाइजर भलिया यूज करा जिवो बा गछ पत्र रे सार भलिया काम करिवो जनरली इकोस एंड टॉयलेट ता को जगह रे करा हितला कोन हबो इकोस एंड टॉयलेट कोलकाता केरला हाँ हाँ सार्थक कोलकाता नुआ कोन इकोस एंड टॉयलेट दैट इज श्रीलंका एंड केरला बहिर अछि बा एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखा है इकोस एंड टॉयलेट एनवायरमेंटल इशू रो क्वेश्चन तमरो इकोस एंड टॉयलेट जनरली केरला आ श्रीलंका कि एमिति गोटे दैट इज मनीषर झाड़ा को बा ह्यूमन रा एक्सक्रीट को तमे यूज करिवो ताको कोन पई ना फॉर द फर्टिलाइजर बा ताको गोटे कंपोस्ट करी की यूज करिवो जनरली केरला एंड श्रीलंका रे हैला केरला और श्रीलंका 1 1 2 वाचिंग मात्र एते कम पिला चलो नेक्स्ट शुभंकर बढ़िया चलो तापर क्वेश्चन हमरो हेलो 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 पिंकू भाई को डका जाऊ ए पिंकू भाई बहुत फैन पिंकू भाई हमर एक नंबर पिला बढ़िया पिला जहाँ तुम एडिटिंग होउची आ जहाँ तुम थंबनेल पकाउची आ जो वीडियो गुडा अपलोड कराउची ये सब दैट इज पिंकू भाई ही अवदान श्योर देखिबी तृप्ति एबे एबे ठीक है गला रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा कोन है आंसर दैट इज व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रे एंड प्रोडक्ट कोन जाओ एंड मेनी मेनी थैंक यू कि तुम माने एते समय पर्यंत वेट करूछो ये ऑडियो पढौची बोली एंड विद्यासागर क्लासेस तुम जो माने जड़ित अछ सीरियसली दैट इज तुम हम माने सब गोटे फैमिली रो बहुत सारा पिला छन एंड बहुत सारा चैनल रे भी अछंती जदी गोटे मिनिट भी किछि प्रॉब्लम होय देन पिला माने दैट इज इमीडिएटली कटि जानती बा दैट इज संग संग ड्रिफ्ट हो जानती बट आम मानकर पिला सेमती नाही कि वेट करंती व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रे एंड प्रोडक्ट कोन डिकम्पोजिशन रे एंड प्रोडक्ट कोन ह्यूमस जनरली डिकम्पोजिशन हो गला पर कोन एंड प्रोडक्ट तुमको ह्यूमस मिलियो डिकम्पोजिशन ऑफ एंड प्रोडक्ट
Okay, end product of that is humus. Next question चलो, average number of RBC body fluid and circulation ର question कौन हबो? पिला हमर कहि दउछन्ते प्रियंका watching 133 and what like is 85. तो कौन हबो? That is the average number of RBC in a healthy adult man. Healthy adult man रो that is कौन हबो? Healthy adult man रो RBC रो count केते? हम जानि छे 5 million रो 5.5 million per millimeter cube and number of platelet हम जानि छे 1.5 लाख रो 3.5 लाख and हम जानि छे average number of WBC केते? That is 6000 रो 8000 millimeter cube per millimeter cube. टिके तळगु नेलो जो एटा कमेंट गोटे बड़ कमेंट कारोटा आछि गोटे बिग कमेंट आस्तला पायल प्रत्याशा सर थैंक्स आपण समस्त गोटे फैमिली माने यस तो माने समस्त गोटे फैमिली एंड थैंक यू सर मार्केट रे घाटू छंती अमेजिंग कृष्ण जय श्री कृष्ण चलो द पाइवट जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स फाउंड इन बिटवीन जनरली देखो हमर तीन टाइप रो जॉइंट अछि गोटे अछि फाइब्रस जॉइंट आ गोटे अछि कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड अदर वन इज साइनोवियल जॉइंट थैंक यू शुभंकर हम जानि छे जनरली थ्री टाइप रो जॉइंट फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट साइनोवियल जॉइंट एंड जनरली फाइब्रस जॉइंट तो हमर जो स्कर रहला बा क्रानियम रहला बा जो हमर ब्रेन बॉक्स रे जो बोन गुडा रहला ताको भीतर जो जॉइंट गुडा देखा जिवो दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट आ ये जो बोन भीतर जो जॉइंट गुडा अछि एटा ए बोन गुडा इमूवेबल बा केबे बेले मूव करंतनी बा फाइब्रस जॉइंट जो स्कर रे अछि बा हमर क्रानियम रे अछि एटा मूवेबल करिवनी आ कार्टिलेज जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट जो देखियो हमर जो वर्टिब्रल कॉलम रहला तो वर्टिब्रल कॉलम भीतर जो टू वर्टिब्रल बोन भीतर जॉइंट रहला कार्टिलेजिनस जॉइंट बोली कहे एंड साइनोवियल जॉइंट कोन ना साइनोवियल जॉइंट होची दैट इज जेमति के पाइवट जॉइंट कोड देखा जाय एटलस एंड एक्सिस भीतर मन रखिबो और ट्रिक मन रखियो पाइवट जॉइंट को मन रखिया पई पा पी ए पा पी पर होचे पाइवट जॉइंट देखा जिवो कोठी एटलस आउ एक्सिस माने कोटा कहलो द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एज एटलस वर्टिब्रल कॉलम रो प्रथम बोन को एटलस को जाय तो एटलस एंड एक्सिस भीतर जो जॉइंट रहला दैट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट देन दैट इज द हिंज जॉइंट कोट लोकेटेड हिंज जॉइंट नी रे एटा मन रहि जिवो एंड ग्लिडलिंग जॉइंट कोट देखा जाय ग्लिडलिंग जॉइंट देखा जाय कार्पेल माने ए जो जॉइंट रहला गोल्डन कार बोली मन रखो गोल्डन कार होची ग्लिडलिंग जॉइंट कार्पेल देखा जिवो पा होची दैट इज पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस भीतर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्पेल और मेटाकार्पेल भीतर कोडा देखा जिवो सैडल जॉइंट चलो ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडी दिले हम जदी कहि परे दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ए जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चलो नेक्स्ट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडी व्हाट इज द प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द thoracic chamber which structure is present on the lateral side of the thoracic chamber रो lateral side रे कोटा प्रेजेंट कोन हबो lateral side of the thoracic chamber रे कोटा प्रेजेंट elbow and the knee joint perfect elbow and the knee joint रे hinge joint शुभंकर कोन आंसर दैट इज व्हाट इज lateral side हमें जानि छे thoracic chamber रे जनरल lungs टा प्रेजेंटेड अछि and lungs is situated dorsally by the vertebral column ventrally by the sternum and lateral side by the ribs बा हमें जदी lungs रो लोकेशन देखि आइया दैट इज lungs को प्रोटेक्ट करछि हमर बैक साइड रे vertebral column and the front side रे sternum single bone and lateral side रे ribs तो यही कथा तो lateral side रे क्वेश्चन पछे छै lateral side रे ribs and हमें जानि छे जनरली ribs रो केतरा बोन 12 पेयर बा जामे जाउ कोचे 24 टा बोन and 24 टा बोन बा 12 पेयर भितरु 7 पेयर होचे ट्रू ribs and 8 9 10 टा को that is the false ribs and free floating ribs होचे 11th और 12 पेयर भितरु 1 to 7 पेयर that is called as true ribs and that is 8 9 10 टा को हमें कहूचे
false reef 11th और 12th को होचे that is the free floating बढ़िया चलो कुओ पायल कुओ को झील को काटंतु आंसर दियो देखो इग्नोर यार ये जदी कोन कहूची सर कहा कथा देखाउनी ब्लैक रे लिखंतु ओके ब्लैक रे लिखि दबा एटा को द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर रे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कोटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर ब्लैक रे लिखिया ओके ब्लैक जनरली होल बायोस्फीयर रे कोटा होची मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आंसर कोन हबो ब्लैक रे लिखिया अनिल ठीक अछि being of the secret कोन हबो आंसर दैट इज रुबिस्को मन रखिबा आ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड जदी क्वेश्चन पचाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कौन कटियो एटा क्वेश्चन टा ऊपर नेले तो देखा होतियो ना अरे तमरो जो दैट इज जो जियोटा जो फोटो आसुची तो क्वेश्चन टा ए लेवल रे क्वेश्चन रहले तो तुम देखा होची बे सर आप रे वॉइस अलगा एठी वॉइस अलगा कोलाजेन राइट परफेक्ट मन रखिबो कोलाजेन होची मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड जदी एनिमल वर्ल्ड रे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रचारला ताले पूरा मन रखिबो दैट इज द कोलाजेन एंड होल बायोस्फीयर रे पचारिले कहबो रुबिस्को बायोस्फीयर बडो ना रुबिस्को बडो ना एनिमल वर्ल्ड छोटो ना एंड एटा होची एनिमल वर्ल्ड छोटो ना एंड कोलाजेन टा छोटो ना तो एनिमल वर्ल्ड कोलाजेन आ बायोस्फीयर रे रुबिस्को बढ़िया अछि चलो से जियो को काटी दबा ना एबे तुम क्वेश्चन तो देखा होथिबो एई लेवल रे क्वेश्चन रे देखा जीवो पायल देखिल तो मेसेज देखिला एबे देखाला पूरा जियो रो मुंडो ऊपर थी ऑप्शन टा स्कैन डॉक्यूमेंट कैंसल चलो द होल कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रेड ही गला कोन स्क्रीन टा चलिबो ओके कोन आंसर आज क्लास होला पर 100% पिंकू भाई को देखिया प्रत्याशा ठीक अछि the whole collection of plants or their seeds having all the diverse allele for all genes in a crop is called as कोन germplasm collection ठीक अछि ए बढ़िया चलो नेक्स्ट which new area of biology is closely associated to human genome project ro question generally the new area of biology is closely associated with the human genome project 1990 रे biochemistry bioinformatics biotechnology ना biomechanics कोन हो bioinformatics ठीक अछि चलो bioinformatics next चलो a graphical representation to calculate probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross if the possible gametes are written on two sides usually top row and left column this is known as टेस्ट क्रॉस ना डाइहाइब्रिड क्रॉस ना पोनेट स्क्वायर ना कोडोमिनेंस कोन हबो पिंकू भाई को आज रिवील करिया ओके 150 कर दियो लाइव हम पिंकू भाई के हम रिवील करिया दैट इज पोनेट स्क्वायर बढ़िया अछि समस्या आस्तिबे क्वेश्चन उडा अर्थ एवरेज टेंपरेचर व्हाट इज द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ कोन हबो व्हाट इज द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ आंसर दियो कोन हबो व्हाट इज द एवरेज टेंपरेचर ऑफ अर्थ रो एवरेज टेंपरेचर कोन 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस केते हबो 25 सी 25 डिग्री सेल्सियस
149 आ गोटे करो देन जिंदे 150 प्लस हबो व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ आंसर कोन हबो 25 average temperature that is 15 degree celsius not 25 but समस्त का आंसर आसी 25 बोली that is 15 degree celsius okay कोन हबो that is लुभा नीट रो क्वेश्चन पेपर देखो नीट रो क्वेश्चन पेपर तो हम डायरेक्ट कहबानी कॉपी पेस्ट होची बोली ओयूट रे बट नीट रो क्वेश्चन आसी परिबो काई आसी परिबो होला चलो कोन हबो 15 degree celsius the next question chalo the German botanist who demonstrated for the first time the plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution जर्मन जो botanist थिले कि without any soil बिना soil यूज करी कि से कोन कर देथिले ना that is plant रो प्रोडक्शन कर देथिले ताले कोन आंसर 14 मिनिट ठीक अछि कोन आंसर बिना soil यूज करी कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक रे दैट इज द प्लांट रो डेवलपमेंट करथिले ता कोन को आजिवो 15 होला 15 डिग्री सेल्सियस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड इजी क्वेश्चन हैला कोन हबो द जर्मन बोटानिस्ट जूलियस बॉन्सवैक्स ना द एग्नेस आर्बर ना दैट इज द ग्रेगर मेंडल ना द कार्लस लिनियस कोन आंसर ए जूलियस बॉन्सवैक्स जे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक करथिले एंड हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक रे कोन करथिले ना जनरली विदाउट एनी यूज ऑफ सॉइल बिना सॉइल यूज करके न्यूट्रिएंट मीडिया देकरी अमीनो एसिड सो देकी प्लांट हार्मोन देकी जनरली गछर डेवलपमेंट करथला एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक टेक्निक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेरा टाइफाइड टिटानस साइट्रस कैंकर को डिजीज फंगल ना हेल्मिथेस ना वायरल ना बैक्टीरियल लाइव क्लास रे बहुत तरह कहछि दैट इज को डिजीज मन रखिया पे कोलेरा टाइफाइड टिटानस साइट्रस कैंकर झीर मुंडटा रही जाउथिबो कोलेरा टाइफाइड टिटानस साइट्रस कैंकर को कोन हबो कोलेरा टाइफाइड टिटानस साइट्रस कैंकर ब्लैक रे आंसर कोन हबो आई थिंक समस्त आंसर परफेक्ट बैक्टीरियल डिजीज राइट तो मन रखियो कोन कटक तुम मानकर सेंटर भी पडिथो कटक रे कटक CTTC मन रखो दैट इज कोलेरा टाइफाइड कोलेरा डिजीज कॉज करे दैट इज द विब्रियो कोलेराई टाइफाइड होची साल्मोनेला टाइफी एंड कोलेरा टाइफाइड टिटानस किए क्लोस्ट्रिडियम टिटानी एंड साइट्रस कैंकर जांथोमोनास साइट्रस कैंकर बा लेंबू गछरे जो डिजीज टा हुए तो ये सब डिजीज होची बैक्टीरियल डिजीज पढ़िया अछि चलो कान्हा चला नेक्स्ट कोन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन जनरली हाइंड ब्रेन रो फंक्शन आ भितर कोटा नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन हमें जानि छे ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन रो पार्ट मिड ब्रेन रो पार्ट एंड हाइंड ब्रेन रो पार्ट भी जानि छे तो क्वेश्चन आदर कोन हबो सर मोर तो नीलगिरी बड बालेश्वर रे पड़ी जोठी भी पड़ी एग्जामिनेशन सेंटर आगो तुम एग्जाम रो सेंटर जोठी तुम पड़ी ताकू तुम प्रीवियसली से एग्जाम सेंटर रो पिन कोड देखि कि दैट इज हमर बहुत पिला भी एमते हैरान होइचंती गोटे जगह रे एग्जाम सेंटर पड़ी बट से माने गूगल रे सर्च करचंती तो सेही टाइप रो कॉलेज अलग जगह देखि एंड से माने भूल कॉलेज रे पहुंचन देन परमुहूर्त रिटर्न करि पारनांती एंड सो दैट एग्जाम भी कैंसिल होइछ तो तुमको दैट इज एग्जाम सेंटर प्रीवियसली आगो पूरा परफेक्टली तुम गूगल करिकि दैट इज द पिन कोड देखि कॉलेज रो लोकेशन देखि सब रेडी करियर अछि एंड एग्जाम जदी जो मानकर सेंटर बहुत दूर पड़छि सो ट्राई करो कि बहुत जल्दी जीवा पई एंड पेरेंट्स मानको जीवा पई ट्राई करो जदी सेठी किछि रिक्वायरमेंट थिबो या किछि जिंस थिबो तो इमीडिएटली पेरेंट्स माने जोगई परिबे सिंगल टारो पेरेंट्स माने से गले भलो तापस रंजन विश्वाल सर आई लव यू टू तापस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन कोन हबो जनरली हाइंड ब्रेन रो पार्ट की मेडुला ऑब्लिंगेटा तो जनरली मेडुला ऑब्लिंगेटा रो काम कोन तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड द रेस्पिरेशन but expression of emotional reaction is a function of forebrain but हम कहि परे forebrain रो there is a structure limbic system रो काम कोन limbic system रो काम होची that is the
इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर ये सब को मेंटेन करे सो दैट फोरब्रेन आंसर ऑफ एटा नॉट होची एटा चला मेडुला ऑब्लिंगेटा नेक्स्ट देयर इज ए सेंटर मते को कि दैट इज व्हिच इज द सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा व्हिच कंट्रोल द रेस्पिरेशन द सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन द से 500 मीटर पर सर मेरा विद्यासागर क्लासेस से 5 मीटर आफ्टर एग्जाम में जामशेदपुर से भुवनेश्वर सियोर आसो आराम से जिते बड़े भी तुम जहाँ भी मीट करार थी देन कम टू विद्यासागर देन विल मीट चलो कौन आंसर राइबोसोम आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दैट वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल जनरली राइबोसोम को किए डिस्कवर करते फर्स्ट जॉर्ज पालेटे रॉबर्ट हुक थियोडोर स्क्वायर ना एंटोन वॉन लियोनक कौन हम आंसर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सर मो नेम लुभा नुहे लुबना सॉरी लुबना सो करछि लुभा ना सो दैट तो कौन होची द जॉर्ज पालेडे एंड रॉबर्ट हुक होची नॉन लिविंग सेल एंड थियोडोर स्क्वायर होची दैट इज द जूलॉजिस्ट एंड द एनिमल सेल डिस्कवर करथले एंटोन वॉन लियोनक होची लिविंग सेल नेक्स्ट चलो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ए न्यूरल मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इजी क्वेश्चन यार मिक्चुरेशन रे कौन हुए कौनटा रिलीज हुए द प्रोसेस मिक्चुरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच द रिलीज ऑफ इंसुलिन ना ग्लूकागन ना थायरॉक्सिन ना यूरिन कौन आंसर दैट इज हां यूरिन सुशांत निवेदिता डी ना यूरिन न्यूरल मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिक्चुरेशन दैट इज यूरिन ओके यूरिन तो मत कहो कि जनरली व्हिच सेल ऑफ द पैनक्रियाज विल रिलीज इंसुलिन व्हिच सेल ऑफ पैनक्रियाज विल रिलीज इंसुलिन अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल जनरली व्हिच सेल इज रिस्पांसिबल टू रिलीज द इंसुलिन व्हिच सेल इज इंपोर्टेंट टू रिलीज द इंसुलिन अल्फा सेल बीटा सेल ना डेल्टा सेल व्हिच सेल इज रिस्पांसिबल टू रिलीज द इंसुलिन अल्फा सेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन दैट इज इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल और इट विल डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल What is the main function of insulin? It will increase the blood glucose level or it will decrease the blood glucose level. जेतोले blood रे glucose level कमी जीवो so that it will increase the blood glucose level. Blood रे जेतोले glucose level कमी जीवो तो insulin टा blood रे ओ insulin रा function blood रे glucose level बढ़ी गले it will decrease the blood glucose level. When the blood glucose level will high तो डिक्रीज करिवो इंसुलिन को डिक्रीज ग्लूकागन टा इंक्रीज करिवो नेक्स्ट वेयर इज द फ्रॉम व्हिच ग्लैंड द थायरॉक्सिन विल रिलीज फ्रॉम व्हिच ग्लैंड थायरॉक्सिन कमिवो ठीक अछि दैट इज व्हिच ग्लैंड विल रिलीज थायरॉक्सिन टा जनरली को ग्लैंड रिलीज करिवो कोन आंसर थायरॉक्सिन दैट इज थायराइड ग्लैंड एंड जनरली हमें थायरॉक्सिन को कोन बोली कहउछे T3 हार्मोन और T4 हार्मोन What is the other name बा हमें को हार्मोन को जनरली कहि पेरा थायरॉक्सिन T3 और T4 कोन हो आंसर T3 और T4 which one is called as the thyroxine T4 बढ़िया अर्जिता फर्स्ट आंसर चलो RNA interference method is used to protect the tobacco plant जनरली tobacco plant को प्रोटेक्शन करिया पे हम पढिथिले एटा बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन करिजे तो जदि गोटे फार्मर टोबैको प्लांट को फार्मिंग करिया चाहूसी एंड दैट इज टोबैको प्लांट रे ये प्रॉब्लम होची कोन ना दैट इज तार नेमाटोड जो थिला मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया तो टोबैको रो रूट को अफेक्टेड करथिला तो जनरली आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक रे दैट इज द पोको जो नेमाटोड रहला तो नेमाटोड रो एमआरएन को साइलेंस कराउतला ठीक अछि तो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएन रो कांसेप्ट आरएनए इंटरफेरेंस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन रो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीटी रो क्वेश्चन ताले कोन आंसर नेमाटोड पड़े तापर चलो when a sperm is directly injected into the ovum of the laboratory generally if you will inject the sperm into the cytoplasm of the ovum in the laboratory then this condition is called as कौन हबो extradermal injection intradermal injection extra cytoplasmic sperm injection ना intracytoplasmic sperm injection ICSI intracytoplasmic sperm injection it is called as intracytoplasmic sperm injection चलो next D option in which of the following is expenditure of energy is required in which process sorry for the last class Shubhankar
It's okay, Shubhankar. कौन आंसर? In which of the following is expenditure of energy required? Active transport, osmosis, diffusion, passive transport. कौन हबो? आंसर दियो. 148 watching. Which of the following is expenditure of energy? Active transport, osmosis, diffusion, passive transport. कौन आंसर? Easy question. Active transport. Perfect. Next चलो. Which of these would help people, especially those in the adolescence? भाई तुम माने भी जो एज रे छो adolescence age, तो एई एज रे a lead to a reproductive health life. Which of these would help people, especially those in the adolescence age group, to lead a reproductive healthy life? एमान पे तो कोनटा दरकार तांगु. Not sharing the details of reproductive organ related रे कौन सी details? Rahul creation, it's okay. Nematoxic center which is located in the pons area, and the generally nematoxic center ta regulate करे respiratory rhythm center which is located in the medulla oblongata. Medulla oblongata signal जाए that is the contraction करिया पई diaphragm and the external intercostal muscle, and nematoxic center ru signal जो respiratory rhythm center को that is contraction signal को अटकेया पई. ठीक अछि. तो कौन आंसर? कहिदले शुभम. Nematoxic center which is important to regulate the respiratory rhythm center which is located in the pons area. Dipti, okay. आंसर दियो कौन बार? C आंसर आसी समस्त double I triple I IV. That is the safe and hygiene sexual practice, knowledge about the sexual transmitted diseases, that is adolescence and related change group. तो कोटा दरकार? safe method to find out the sex of the fetus. तो I दरकार, double I दरकार, ट्रिपल आई दरकार, आई भी दरकार. नॉलेज अबाउट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नॉलेज दरकार. सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस भी दरकार, एंड आल्सो एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस भी जाने दरकार. चलो नेक्स्ट होची कोन? द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक एंड 4 चैम्बर, मायोजेनिक एंड 3 चैम्बर, मायोजेनिक एंड 4 चैम्बर. बहुत तरह क्वेश्चन एडा पचार हम लाइव रे. ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक ना मायोजेनिक ना कोन हबो? ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक एंड 4 चैम्बर ना मायोजेनिक ना 4 चैम्बर? कोन हम जानि छे ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड 4 चैम्बर. एंड जनरली ह्यूमन हार्ट जदी ह्यूमन हार्ट रो शेप ए बळा नो. ह्यूमन हार्ट हम जानि छे ओटे क्लींज्ड फिस्ट बळिया. तो जनरली ह्यूमन हार्ट जदी ओटा पंपिंग ऑर्गन हुए तो पंप को स्टार्ट करे पे देयर इज ए पेस मेकर इज लोकेटेड, एंड पेस मेकर को आजे एसए नोड. एंड ह्यूमन हार्ट को जदी हम बॉडी बाहर भी आनी की रखि दबा so that human heart भी that is beat करे, so that human heart को start करे पे कौन सी external stimuli दरकार नहीं. and human heart is myogenic and generally 4 chamber, right atria left atria and right ventricle left ventricle. चलो what is the most effective treatment for the kidney failure? What is the most effective treatment for the kidney failure? आउ केतरा क्वेश्चन सुमित आउ अल्प क्वेश्चन अछि कर दियो, सार दबा धड़ा धड़ करो, सार दबा. आ अल्प क्वेश्चन अछि. तृप्तिमय देखो व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द किडनी फेल्योर? शुभम ऑलरेडी तुम आंसर देली. न्यूमाटॉक्सिक सेंटर एंड स्पेलिंग होची PNEU नॉट NEU रो स्टार्ट. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव सेंटर? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव न्यूमाटॉक्सिक सेंटर? ऑलरेडी कहली शुभम, बार बार तुम कॉपी पेस्ट करछो कि दैट इज न्यूमाटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स एरिया. ऑलरेडी कहि सारछि. and the function भी कहली. this is respiratory rhythm center regulate करे. which of the most effective treatment for the kidney failure? कौन हबो? सार्थक किडनी ट्रांसप्लांट. ओके सोनाली ऑप्शन देखाओ नी. किडनी ट्रांसप्लांट देखो ये क्वेश्चन देखो. which of the following is correct forelimb of the bones in mammals? एटा कोन टी जूम कले होबो की? which of the following is correct forelimbs bones for the mammals? Generally humerus, radius, ulna, carpal, tibia, phalanges. ना phalanges, tarsal, carpal, metacarpal, humerus. ना humerus, radial, ulna, carpal, metacarpal, phalanges. फोर limbs रे जो बोन गुडा रहले तारा ना गुडा को कोन आंसर? which of the following is correct for the four limbs of a bone in mammal? जनरली हेमोडायलिसिस रे ब्लड गुडा को आना जीवो, दैट इज कोटी कि ना गोटे हेमोडायलिसिस यूनिट भीतर को देन यूनिट भीतर ब्लड को प्यूरिफाई करा जीवो, देन अगेन बॉडी भीतर एंट्री करा जीवो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फोर लिम्स? एंड हम जानि छै ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फालेंजिस. मन रखिबो कोटी को जॉइंट अछि, ग्लेडलिंग जॉइंट कोटी, सैडल जॉइंट कोटी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कोटी, नी जॉइंट रे को नी रे जॉइंट रे को जॉइंट, हिंज जॉइंट,
Study of comparative anatomy, fossils and comparative biochemistry provide evidence for the heredity, gene pool, biological classification na evolution. कौन हबो आंसर दियो. ताले कौन हबो हेरिडिटी, जीन पूल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. इंस्टीट्यूट जदि हम राहुल इंस्टीट्यूट होची विद्यासागर क्लासेस जोटा कि तमरो नयापल्ली दैट इज बाणी विहार, आचार्य विहार, जयदेव विहार, नयापल्ली. तो नयापल्ली रो जो रिची रेसिडेंसी गोटे रहला तो तमे सर्च करि परिबो नयापल्ली रिची रेसिडेंसी रो पूरा फ्रंट रे बा जदि कहबो इस्कॉन मंदिर रो पाखरे पूरा. केबे इस्कॉन मंदिर बुलिया को आसछो सो आसो विजिट करो कोचिंग को. एंड जेहेतु तुम आमर विद्यासागर क्लासेस रो फैमिली तो किछि भी रिक्वायरमेंट होबनी आराम से आसो. स्टडी ऑफ कंपैरेटिव इवोल्यूशन. नेक्स्ट चलो. Secondary productivity is a rate of formation of new organic matter by consumer, decomposer, parasite, producer. कौन हबो formation of omitted chapter question आसीबो हला that is Romali. तो भाबोनी कि omitted chapter आसीबोनी बोली there is no clear cut notification from the OUT so that हम या भाबी चलिया कि हबो ओ जुपिटर कोलेस्टर पाख हबो सर्च करके आस परिबो हला कंज्यूमर. आंसर हो जी कंज्यूमर. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ. चलो नेक्स्ट. This happens when the plant cell loss water and their cell membrane shrinks from the cell wall. जदि गोटे plant cell water loss हो जाए cell membrane टा shrink हो जाए that is called as diffusion, active transport, facilitated diffusion ना plasmolysis. कौन होबो diffusion, active transport, plasmolysis. प्रियांशु कंज्यूमर. से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो plasmolysis. बढ़िया अछि एमडी कौशर. चलो. Which of the following cell organelle in a prokaryotic cells produce extension in the form of vesicle, tubule and lamella? Vesicle, tubule, lamella. Question कौन होला देखो. That is which of the following cell organelle in prokaryotic cells produce extension in the form of. एउ तुम जानि परछो कि prokaryotic cell रो extension पचारछि माने आखि मुजी के कोन that is mesosome. तो आंसर पूरा आराम से पाखरे mesosome बोली. नेक्स्ट चलो. The part of the stomach that opens into the first part of the small intestine. Generally stomach रो को पार्ट ता small intestine stomach रो को पार्ट small intestine of first part को opening होची. This is the stomach and this is the cardiac part and this is the fundus part and this is the pyloric part. तो generally stomach रो pyloric part टा open होबो कोठी ना small intestine को. ताले आंसर कोन होबो pyloric and there is a sphincter is located called as pyloric sphincter. ठीक अछि. इजी क्वेश्चन यार. नेक्स्ट चलो. Which type of epithelial lines आ अल्प क्वेश्चन रहला. पांचटा क्वेश्चन 6टा क्वेश्चन. What type of epithelial lines proximal convoluted tube? Generally kidney रो जो PCT रहला तो PCT रे फंडिक नो. दिस इज द पाइलोरिक. ओके लक्ष्मी ठीक अछि. बढ़िया. दीप्ति पाइलोरिक. हां स्टोमक रो तीनटा पार्ट कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक. तो पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ओपनिंग होय. What type of epithelium lines the proximal convoluted tube of nephron? Squamous epithelium, simple cuboidal broad border epithelium, columnar epithelium ना simple cuboidal epithelium. कोन हबो आंसर समस्त करो दियो. विजयलक्ष्मी, शाश्वती, सौदामिनी, that is हिरण माया, शिप्रा, अर्जिता, पायल. पायल हमें that is 100 जीवो. डोंट वरी. आ ऑटो क्वेश्चन रहला. What type of epithelium lines the proximal convoluted? Simple cuboidal broad border epithelium. Simple cuboidal broad border. Next question चलो. What is an in situ conservation? In situ conservation कोटा? Conservation of a species in zoological park or botanical garden. Na conservation of plant in the seed bank. Na conservation of a species by preserving the gamete through the cryopreservation. In situ example cryopreservation ta ex situ. Seed bank is an example of ex situ. And nature habitat biosphere reserve. Biosphere reserve, national park, wildlife sanctuary. These are example of in situ. तो question कौन हबो in situ पचारछि. In situ कौन हबो biosphere reserve, नबे national park, wildlife sanctuary एमान सब होछि in situ. But cryopreservation, seed bank, botanical garden, zoological park एटा होछि in situ. That is ex situ. ताले आंसर कोन हो डी. समस्त डी डीटा जाक कला बेल को बुझी होउनी. अरे पायल तमे गोटे करो हला. The Leydig cell found in the human body are a secretory source of. That is human body रो जो रहिला Leydig cell. तो Leydig cell टा को हमें secretory cell काहे कहउछे बा जनरली कोन secrete करूछि हमर Leydig cell को. आंसर कोन हबो आशुतोष, लुबना, शुभ्रा, अर्जिता, डॉक्टर, साई स्वप्ना, प्रियांशु, सोनालिका, विजय, मोनालिसा, वॉइस ऑफ कृष्णा, एलिना. कौन आंसर?
So Leydig cell found in the human body are secretory source of androgenic hormone testosterone, the androgen. Then the dash represent the symbiotic relationship. किए generally represent करुची symbiotic relationship को कौन होगा question? Answer दियो lichen, autotroph, saprophyte, parasite कौन होगा? सर एटी सरले सेटी जनवा 2 मिनिट पिलांगर केमिस्ट्री क्लास अछि ए तो कौन होगा आंसर? रिप्रेजेंट द symbiotic relationship lichen. आंसर रेडी lichen फाइकोबैंड के माइकोबैंड के मन अछि चलो तापर क्वेश्चन that is our question pacharla in general there is an increase in species diversity as we move towards the equator from the pole which is the following changes the unpredictable seasonal changes in temperate region which of the following is not a region कोटा की generally region नुह that is the tropical altitude have remain relatively undisturbed for geographical for million of comparison temporary कौन answer the unpredictable seasonal changes in temperature region less solar energy in the tropical region na tropical altitude have an energy relatively undisturbed na less solar energy the temperate region कोटा गोटे region नो less solar energy temperate na less generally answer कौन होबो less solar energy in the tropical region रे maximum diversity देखा जाती तो आंसर होबो कौन बी ठीक है एटा डी गोटे पछर गोटे मेसेज वाला टिके देखिले पछर गोटे कोन गोटे सर प्लीज बोली गोटे बड़ मेसेज आस्थिला टिके देखि दवा हां सर प्लीज कहंतु जे को क्लास रे कोर्स कोन आमे एबे बेसी फोकस करबा 11th और 12th तो बेसिकली तमे 12th चैप्टर रो फोकस करो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मतलब चारटा जिंस कांसेप्ट अछि ताको थरे देखि दियो आ बायोटेक्नोलॉजी टिके देखि दियो देन इकोलॉजी को पूरा भलो से देखो इकोलॉजी इंपोर्टेंट then sexual reproduction flowering plant देखो and जो genetics रो क्वेश्चन सेडा देखो आ 11th चैप्टर plant physiology animal physiology आ cell biological classification चलो next Skeldon and Swan together formulated the cell theory and this theory before final shape did not explain which of the following Skeldon and Swan तो generally Skeldon and Swan होचे cell theory दे देतिले कि all the living organisms are composed and product of cells सर पिंटू भाई को देखा करिवे प्लीज सर पिंटू भाई ना पिंकू भाई ओके कौन हला दैट इज स्केल्डन स्वाल सेल थ्योरी देई दिथिले बट से एक्सप्लेन करि नथिले कि दैट इज द सेल्स उडा कोड तयारी तो एक्सप्लेनेशन की दिथिले रूल ऑफ बिचो से कहथिले कि ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल ताले कोन आंसर बी होबला सेल थ्योरी देइथिले स्केल्डन एंड स्क्वान बट तांकू रेक्टिफाई करथिले बा सेल थ्योरी को मॉडिफाई करथिले रूल ऑफ बिचो एंड रूल ऑफ बिचो को मॉडिफाइड थिला ये all the cells are arising from the pre-existing cells and 1855 मसिया रे ठीक अछि which of the following phyle is a member of true xylem generally phylum भितर कोटा गोटे true xylem रो member Coelenterata porifera arthropoda ctenophora हम जानि छे that is ascolenates होची porifera Coelenterata ctenophora platyhelminthes pseudocoelemate होची ascolenates and true xylem होची arthropoda I think समझ में राइट आंसर सर मु भगवान को एही प्रार्थना करे कि मोर OUT क्लियर हो जो हेले जाई कि मु आपन को देखा करि पारिबी 100% भगवान पर बिलीव रखो एंड बापा मांगर ब्लेसिंग भगवान कर ब्लेसिंग रु तमरो OUT हेई जाओ एंड मु दैट इज ए एक्सपेक्ट करिवि दैट इज तो सब पिलांकर OUT हेई जाओ ठीक अछि चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज मेंबर ऑफ ट्रू xylem arthropoda इनसाइड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द लीफ इन द लैक्टेल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइल बिली हम ऑलरेडी डाइजेशन रो क्वेश्चन कला बेले ए क्वेश्चन उडा करिछु बहुत सारा क्वेश्चन मु तमु दैट इज रैपिड फेरे पचारची तो कौन पचारची दैट इज लैक्टियल्स रे जो लीफ रे हम जो दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन रो जो प्रोजेक्शन को हम विली कहूचे एंड विली रे जनरली लैक्टियल्स प्रेजेंट अछि तो लैक्टियल्स टा जनरली काहा को ऑब्जर्व करे हेल्प करे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इजी आंसर सौदामिन मिनरल दैट इज लैक्टियल इज इंपोर्टेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट मन रखिबो देखो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब ब्लड रे ऑब्जर्व हेबे किंतु फैट नामक जो जिंसटा रहला से डायरेक्टली ब्लड रे ऑब्जर्व हे परिबोनी तो से डायरेक्टली ऑब्जर्व हो कोठी लैक्टियल्स रे ठीक अछि मन रखिबो फैट हैला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर राइबोज सुगर रो करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हबो C5H10O5 C6H12O6 C3H6 देखो राइबोज सुगर अछि माने लव यू फ्रॉम माय चैनल पतित पावन
पुरुषोत्तम थैंक यू सर रिड्यूस सिलेबस रे ओयूटी जहाँ सीबीएसई रे अछि देखो रिड्यूस सिलेबस रे कहि परैनी कि ओयूटी रे पडिबोनी बोली बिकॉज़ ऑफिशियल वेबसाइट रे कोन सेमति मेंशन हेइनी तो राइबोस सुगर माने पांचटा हबो आंसर एट तमे दैट इज रिलेट करि परिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑल द 5 एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकेनटा कोडाटा इज करेक्ट एमाना भितरे दैट इज कोटा करेक्ट सेलुलर लेवल ऑर्गन लेवल टिश्यू लेवल ना ऑर्गन सिस्टम लेवल एडा हम जानि छै आखी मुजिगिरी गोटे पिला कहिबो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एमान सब होचंदी ऑर्गन सिस्टम लेवल सेलुलर लेवल होची पोरिफेरा टिश्यू लेवल होची सिलेंटेटा टेनोफोरा ऑर्गन लेवल होची प्लाटियल मिथेस एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होची आस्केल सब थैंक यू ममाती चलो बढ़िया देखो भगवान को कृपारु समस्त हो है पॉजिटिव भाइब रखी चलो एंड दैट इज लाइव क्लास रे मु सब जगह पिला को पूरा स्ट्रिक्टली देखो तमे केबे भी मिस करबनी दैट इज लाइव क्लास आज यूजुअल जेमति चली चलीबो एंड तमे दैट इज जदी कॉलेज रे एडमिशन हैला पर भी देन तमे आराम से जॉइन करी देखि परिबो तो आमो भीतर बॉन्डिंग टा केबे हेले ब्रेक हबनी एति ट्रस्ट रख ओयूटी क्लियर हेइ जिवो सस्मिता डोंट वरी पॉजिटिव भाइब रखे दरकार चलो नेक्स्ट व्हाट इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल बायोमोलिकुलर क्वेश्चन और डायरेक्ट एनसेट रू ही क्वेश्चन हला देखो एई जो क्वेश्चन उडा नुहो आखी मुजी की सब जाक एनसेट रू तमे राति रे जदी देखिबा जे ट्राई करबो लुबना तो जदी तमे ट्राई करबो एनसेट रो एवरी लाइन तो डायरेक्ट लाइन को प्रिंट कराई छै क्वेश्चन उडा जो तमरो ऑफिशियल वेबसाइट रे पकाई छै एटा पूरा डायरेक्ट दैट इज तमरो एनसेट रू कॉपी पेस्ट कराई छै ए क्वेश्चन भी सही है वाटर 60 to 70% प्रोटीन 10 ରୁ 15 कार्बोहाइड्रेट 5 ରୁ 7 लिपिड होची 3 न्यूक्लिक एसिड 3 लिपिड 2 एंड मन रखियो हला बायोमोलिकुलर वाटर सबट अधिका प्रोटीन तापर 10 ରୁ 15 आगो त पानी पीबो अधिका तापर प्रोटीन खाइबो तापर कार्बोहाइड्रेट खाइबो तापर न्यूक्लिक एसिड लिपिड आयरन मन रखियो हला ऑप्शन बी हां बी ऑप्शन हला चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अमीनो एसिड डेरिवेटिव पिट्यूटरी आइडोथायरोन थायराइड हार्मोन पेप्टाइड होची इंसुलिन स्टेरॉइड हार्मोन तो स्टेरॉइड ठीक अछि पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन होची प्रोटीन रिसेस हार्मोन तो पेप्टाइड हार्मोन ठीक अछि अमीनो एसिड डेरिवेटिव टा दैट इज इनकरेक्ट अमीनो एसिड होची एड्रेनालिन बा एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालिन एगुडा होसो अमीनो एसिड डेरिवेटिव चलो ये होची तमरो लास्ट क्वेश्चन थिला तो आजि पई ए क्वेश्चन नो दैट इज सेशन एति की थिला नीट रो जो सब्जेक्ट ओमिट अछि ताको पढो हला देखि था ताको दैट इज तमरो क्रीप ब्रो तो जो 4 and 6 रो जो एग्जाम होबो तो केबे भी एक्सपेक्टेशन करबोनी कि 4 रे जो एग्जाम रो क्वेश्चन पड़तला 6 रे से एग्जाम रो क्वेश्चन पड़े बोली ए हेले तो दैट इज पिला आसी घरे आसी त संग मानु कहि देबे ए क्वेश्चन पड़िची बोली ठीक अछि तो क्वेश्चन सेशन सरीला एंड बाकी माइनरली पढो आ गोटे कथा मन रखितो जेतल तुम एग्जाम दबो जमा भी स्ट्रेस न दरकार नै एंड तमरो रिजल्ट भी बाहरिबो सो रिजल्ट बाहरिया को नेकी भी कोनसी सीएचएससी पिला स्ट्रेस न दरकार नै पॉजिटिव रहो आगरो भी म कहिची दैट इज केते केते स्टूडेंट लाइफ रे फेल होचंदी एंड बा किछि मार्क रहउनी पूरा फेल्योर भी उठी के दैट इज कोटी कोटी टंगार ओनर भी होचंदी सो किछि मैटर करबोनी जमा भी पॉजिटिव जिंस रखो दैट इज रिजल्ट जहा हो परे देखा जिवो एंड समस्त हम अछु हमें हैला डोंट वरी आराम से तुम माने रहो भल से रहो खाया पे रहो एंड देहर केयर नियो एग्जाम पर्यंत देहर नियत रूप केयर न दरकार ठीक अछि एंड एग्जाम सेंटर को जीवो केयरफुली एंड बिफोर बहुत पूर्वरु जीवो एमति नाही कि पूरा परफेक्टली मुंडा मुंडी टाइम रे जाई पहुंचबो बहुत पूर्वरु जीवो दैट इज जो उतर भी तुम जाउछो व्हीकल रे स्लो जीवो जमा भी दैट इज लेट करबोनी जहा पले कि तुम पेरेंट्स एंड तुम माने दैट इज स्पीड जाओ पड़िबो स्लो जीवो एंड आराम से जो खाई पी रेस्ट नियो एंड भल से पॉजिटिव जिंस रखो सब एग्जाम ठीक ठाक हबो जमा भी टेंशन नेनी जहा हबो देखा जीवो हला चलो बढ़िया पिंकू भाई ओके पिंकू भाई को देखिया पे इंटरेस्टेड गोटे मिनिट रह जाओ पिंकू भाई थैंक यू रोशन गोटे मिनिट
सर पिंकू भाई को देखांतु गोटे मिनिट पिंकू भाई को डाकिया पिंकू भाई आछंती सर ड्रेस कोड किछि सेमते नाही हैला बट फॉर्मल ड्रेस पिंदी के जीवो सर डेली जिम जाउछंती की रोशन सेई बेले आ तो दैट इज तमर भी ओयूट रिजल्ट सरो तो तम भी जिम जीवो तो पिंकू भाई को हमें डाकिया पिंकू भाई आछंती गोटे मिनिट तो सीयूटी सीयूटी रे तमर केते मार्क होचे 800 रु तो तापर डिपेंड करिवो प्रीति पवन टिके आसो गोटे मिनिट पिला देखि दा गदा पळे खराब और ठीक अच्छे हम नेक्स्ट क्लास रे पिंकू भाई को मीट करिया तो चलो एंड गुड नाइट ऑल द वेरी बेस्ट